Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. In our previous chapter we learn about different identities like a plus b whole square, which is equal to a square plus 2ab plus b square. Similarly, a minus b whole square, which is equal to a square minus 2ab plus b square. Another identity of square we have a square minus b square, which is equal to a plus b and a minus b. Similarly, other quantities of cube we have a cube plus b cube, which is equal to a plus b, a square minus ab plus b square. Similarly, a cube minus b cube, which is equal to a minus b, a square plus ab plus b square. And if we have a plus b cube, a plus b whole cube, then we have a cube plus 3ab, a plus b plus b cube. And if we have a minus b whole cube, which is equal to a cube minus 3ab, a minus b minus b cube. So in the previous unit we learned all these identities. Now we start the next unit number 14, and in this unit we use these identities and factorize the algebraic expression. So our next chapter is factorization of algebraic expression, and in this chapter we learn about how to resolve expression into factors, how to factorize expression of the form ax square plus bx plus c. And key vocabulary which is used in this chapter we have quadratic expression, middle term, coefficient, constant, factors, identity, resolve. And the next we have a maths flash. Solve 4 plus 3 whole cube. So the formula of whole cube we have a cube plus 3ab, a plus b plus b cube. Now we have a 4 and b we have 3. Now open the formula, we have 4 cube plus 3ab, a is 4 and 3 is b, then a plus b means 4 plus 3, now plus 3 cube. 4 4s are 16, 16 4s are 64 plus 3 3s are 9, 9 4s are 36. 4 and 3 we have 7 plus 3 cube is 27. Now 64 plus 36 multiplied by 7 we have 252 plus 27, add the value, we have 343. It means that 4 plus 3 whole cube, which is equal to 343. The next we have resolve 1008 cube into the factors. So हम इसको 2 parts में divide करेंगे. So we have 1000 plus 8 cube. Now 1000 is a and 8 is b. We apply the formula. According to the formula we have a cube plus 3ab, a plus b, then b cube. And the cube of 1000 we have this value plus, by the multiplying 3ab we have 24,000, then a plus b we have 1008 plus 512, which is cube of 8. Now we have this value plus, we multiply 24,000 with 1008, we have this value plus 512, we add the value, we have the answer, which is the cube of 1008. Now we start exercise 14a, resolve into factor. The first question we have 8x cube plus 27y cube. So first question we have 8x cube plus 27y cube. Let a we have 2x and b we have 3y. So students, we have a cube plus b cube. It means that हमारे पास जो यहाँ value होगी वो already cube है. It means
हमने ये देखना है कि जो ये हमारे पास वैल्यू है क्या वो परफेक्ट क्यूब है। अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो हम जिस वैल्यू का वो क्यूब है वो वैल्यू को a कंसीडर कर लेंगे, यानी हमारे पास जो 8 है वो 2 का क्यूब है और x क्यूब मीन्स वी हैव x, सो हमारे पास जो a है वो 2x है। सिमिलरली 27 है, ये परफेक्ट क्यूब है 3 का, और y का क्यूब लेंगे हम। अगर y को क्यूब के बगैर लिखें तो हमारे पास जो b वैल्यू आएगी वो आएगी 3y। नाउ वी हैव 2x एज a एंड 3y एज b। अगर ये वैल्यूज़ हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम ये चेक करेंगे क्या इन दोनों वैल्यूज़ में कोई वैल्यू हम कॉमन ले सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये ऑलरेडी दोनों जो हैं वो परफेक्ट क्यूब हैं। 8 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2 एंड 27 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला विच इज़ a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज़ इक्वल टू a प्लस b, देन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। So a we have 2x cube plus 3y cube. A plus b means 2x plus 3y. Then a square minus ab plus b square. A we have 2x. In the place of a we write 2x and in the place of b we write 3y. Now a plus b, a square minus ab plus b square. So we have 2x plus 3y. 2 to the 4x square minus 3 to the 6xy plus 3 3 is 9y square. So we open the formula and we factorize the value. So the answer is 2x plus 3y bracket 4x square minus 6xy plus 9y square. So the next value we have 81a cube plus 3b cube. 81 is not a perfect cube. 3 is also not a perfect cube. So इन दोनों वैल्यूज़ में हम फिर ये देखेंगे क्या कोई इसमें कोई वैल्यू कॉमन हम ले सकते हैं। तो इन दोनों में जो हमारे पास कॉमन वैल्यू है वो 3 है, सो वी टेक 3 एज कॉमन। सो रिमेनिंग वी हैव 27a क्यूब प्लस b क्यूब बिकॉज 3 वी टेक एज कॉमन। नाउ a वी हैव 3a बिकॉज 27a cube is a perfect cube of 3a, and b we have b because b is a perfect cube of b. Now we apply the formula which is a cube plus b cube which is equal to a plus b bracket a square minus ab plus b square. So we have 3 जो हमने कॉमन लिया था a plus b according to the formula, then a square minus ab plus b square. We put the value according to this. A we have 3a and b we have b. Now we have 3a plus b, 3 3 is 9a square minus 3ab plus b square. So the answer we have 3a plus b, 9a square minus 3ab plus b square. The next question we have 2a cube minus 250. So इन दोनों वैल्यूज़ में भी हमारे पास जो है वो कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। 2 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है और 250 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो इसमें हम कॉमन लेंगे 2. सो बाय टेकिंग 2 एज कॉमन वी हैव रिमेनिंग वैल्यू a क्यूब बिकॉज 2 जो है वो हमने कॉमन ले लिया माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, देन वी हैव 10, 2 5 ज़ा 10. So we have 2a cube minus 125. So now let we have a which is equal to a. A cube is a perfect cube of a and 125 is a perfect cube of 5. So a we have a and b we have 5. Now according to the formula we have 2a minus b, a square plus ab plus b square. So a minus b 2 जो हमने कॉमन लिया था, then a square plus 5a plus 5 5 is 25. So the answer is 2a minus b bracket a square plus a plus 5a plus 25. So the next question we have x raised to power 6 plus y raised to power 6. Let a is equal to x square and b is equal to y square. Because we take cube, so x square is a and y square is b. यानी हमारे पास जो a है वो x स्क्वायर है और जो b है वो y स्क्वायर है. एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई वी हैव 6. सिमिलरली 3 2 is 6. So now we open the formula of cube.
which is equal to a plus b bracket a square minus ab plus b square. Now we have a plus b, which is x square plus y square, then a square minus a b plus b square. So a we have x square and b we have y square. Now x square plus y square, which is bracket 2 to the 4, then x square y square plus y raised to power 4. So the answer we have x square plus y square, x raised to power 4 minus x square y square plus y raised to power 4. The next question we have 27 bracket a plus b cube plus 1. So here a we have 27 a plus b cube. 27 is a cube of 3. Let we have a which is equal to 3a plus b and b we have 1. Now according to the formula we have a plus b bracket a square minus ab plus b square. So a plus b. A we have 3 bracket a plus b we have 1. Now a square plus now a square minus ab plus b square. So we multiply 3 with a and b. So we have 3a plus 3b plus 1. This value is a and 1 is as b. Then a square, before we taking square हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 को a और b के साथ. सो वी हैव 3a प्लस 3b स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में हम इसका स्क्वायर ले लेंगे. देन माइनस 3 multiplied by a and b we have 3a plus 3b with multiply 1 we have this value plus 1. Now a plus b, इसको देखें तो ये फर्दर हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा विच इज़ इक्वल टू a square plus 2ab plus b square. Now a we have 3a and b we have 3b. So a square plus 2ab plus b square. We put the value of a which is 3a and 3b which is the value of b. Then minus, we open the bracket 3a minus plus minus 3b plus 1. Now a plus b bracket 3 3s are 9 a square plus 2 3s are 6 and 6 3s are 18 ab plus 3 3s are 9 b square minus 3a minus 3b plus 1. So this value is the answer. The next question we have 8 minus a minus b whole cube. So we apply the formula because 8 is a cube of 2. So a we have 2 and b we have a minus b. Now according to the formula we have a minus b bracket a square plus ab plus b square. So we have a which is a 2 cube minus b we have a minus b cube. a minus b. So this माइनस की इस माइनस की वजह से ये हमारे पास जो b वैल्यू है इसका साइन चेंज होगा माइनस माइनस प्लस. सो a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर. सो a स्क्वायर वी हैव 2, a माइनस b मल्टीप्लाई विद 2 वी हैव 2a माइनस 2b. यहाँ पर साइन जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस है. प्लस ये फर्दर फॉर्मूला ओपन हो रहा है द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी हैव a माइनस b. So 4 plus 2a minus 2b plus we have a square minus 2ab plus b square. Now a minus b which is 2 minus a plus b bracket 4 plus 2a minus 2b. Then open the bracket a square minus 2ab plus b square. यहाँ हमारे पास प्लस था इसलिए कोई भी साइन चेंज नहीं होगा. सो आंसर इज़ 2 minus a plus b bracket 4 plus 2a minus 2b plus a square minus 2ab plus b square. Okay students, Allah Hafiz, take care of yourself.